Dear students, welcome to Education World, and I hope you are enjoying the live classes. और आज के लिए जो हमारा टॉपिक है वो जो क्लास 10th CBSE का जो प्रैक्टिस पेपर और सैम्पल पेपर बता सकते हैं। तो इस लाइव सेशन में हम लोग जो साइंस का जो चैप्टर है तो उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी का जो पेपर है, सैंपल पेपर है, वो डिस्कस करेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं जो केमिस्ट्री का जो पेपर है तो उसका जो सैंपल जो क्वेश्चंस है तो उसी का प्रॉब्लम से शुरू करते हैं आज का लाइव सेशन। जो केमिस्ट्री का जो पहला जो क्वेश्चंस है वो है जो डिफाइन होमोलॉगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ये जो है ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जो चैप्टर है तो उसमें आएगा। तो ये है पहले जो क्वेश्चन से क्या पूछ रहा है, जो होमोलॉगस सीरीज क्या होता है। ठीक है। तो हम लोग जो लाइव क्लास में डिस्कशन किया था, जो होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है तो जनरल फार्मूला जैसे हम लेते हैं जो फंक्शनल ग्रुप OH और अल्कोहल जो फंक्शनल ग्रुप है तो उसका होमोलॉगस सीरीज एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करेंगे। जो होमोलॉगस सीरीज का जनरल जो फार्मूला होता है CnH2n plus 1 OH. So this is for alcohol. And if we take a simple, hydrocarbon, if we take hydrocarbon, so then our general formula is H2n plus 2. Okay, so this is the general formula. Now, if we take, so basically n equal to 1, n equal to 1, so this will be CH3OH, and for this case it will be CH4. So we are basically we are taking two examples. One side we are taking the example of alcohol, other side we are taking the hydrocarbon, and they are no homologous series. So basically n equal to 2, n equal to 2, so then we will have CH3 CH2OH, और यहाँ पे क्या होगा C2H6. Okay, so n equal to 3, n equal to 3, CH3, CH2, CH2OH, this is C3H8. तो ये जो दोनों कंपाउंड है तो इसमें क्या है जो डिफरेंस है, तो यहाँ पे जो होता है जो फंक्शनल ग्रुप एक ही है, सो ओनली डिफरेंस विद दिस कंपाउंड, सो दे डिफर बाय 1 CH2 यूनिट। ठीक है। तो ये जो 1 CH2 यूनिट है, सो फ्रॉम फर्स्ट कंपाउंड टू सेकंड कंपाउंड क्या है, एक CH यूनिट का डिफरेंस है, और जो सेकंड कंपाउंड टू थर्ड कंपाउंड यहाँ पे भी क्या है, एक CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है। तो ऐसे भी ये जो हाइड्रोकार्बन है तो इसमें भी हम कंपेयर करेंगे, तो ये जो फर्स्ट नो मेंबर ऑफ दिस फैमिली और हाइड्रोकार्बन फैमिली, तो फर्स्ट मेंबर से सेकंड मेंबर हम जब जाएंगे तो वो CH2 यूनिट का डिफरेंस रहता है, और यहाँ पे भी CH2 यूनिट का रहता है। तो क्या ये डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम नो द फॉर्मूला, और जो जनरल फॉर्मूला having same general formula, that is for hydrocarbon CnH2n plus 2, for alcohol it will be Cn as H2n plus 1 OH. So having same general formula but those compounds are differ by only one CH2 unit. तो एक कंपाउंड से जो जो सेकंड कंपाउंड है तो उसमें CH2 यूनिट का जो डिफरेंस रहेगा, तो ऐसे ही चलता रहेगा, तो उसका जो सीरीज बनेगा तो उसको हम होमोलोगस सीरीज बताया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, तो इसमें जो प्रॉपर्टीज
रहता है वो एक ही जैसा रहता है, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप के लिए जो वो जो प्रॉपर्टीज होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, तो वो हर फंक्शनल ग्रुप के लिए एक अलग होता है। तो यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस क्या है, सिर्फ जो नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंस है, तो इसके लिए जो प्रॉपर्टीज जो रहता है केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगा, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है तो वो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन और द मोलिकुलर weight of this hydrocarbon part, so that will change. So basically the physical part will change, the chemical part of a homologous series will remain constant. Okay, and then the second question, so why can't we have the isomer of first three members of alkene? So here this is our alkene. So basically alkane, so this is the alkane general formula, and general formula इसमें जो फर्स्ट थ्री मेंबर ए कौन आएगा, सो बेसिकली वन टू एन इक्वल टू वन टू थ्री, सो बेसिकली इफ वी टेक n equal to 1, so then we are having CH4, or n equal to 2, so this is our C2H6, and n equal to 3, तो क्या आएगा C3H8। ये जो तीन है तो हम इसको ओपन स्ट्रक्चर में लिखेंगे तो क्या है, ये एक ही कार्बन है, तो फॉर C2H6 ऐसे लिखेंगे तो क्या है, जो CH3 ठीक है। तो ये जो C3H6 ये लिखेंगे तो कैसे आएगा, सो बेसिकली दिस विल बी CH3 CH2 CH3। तो ये जो है ये डिफरेंट जो कोई भी आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम कोई भी इसका अरेंजमेंट चेंज करेंगे तो स्ट्रक्चर एक ही रहेगा। और एक्चुअली यहाँ पे जो चेन आइसोमरिज्म और पोजिशनल मतलब कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कुछ भी हम इधर चेंज कर नहीं सकते। तो इसलिए जो फर्स्ट थ्री मेंबर ऑफ एल्केन जो है तो वो क्या होता है, जो मीथेन मीथेन इथेन और प्रोपेन जो होता है तो वो कोई आइसोमर्स नहीं दिखाता है, बेसिकली दे डू नॉट शोस द आइसोमरिज्म प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये है पहले वाला क्वेश्चंस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ विल गो टू द सेकंड क्वेश्चन। In the second question, so this is from periodic table. So this asks, can the following group of elements be classified as Deborania triads? तो हमने क्या पढ़ा था, जो पीरियडिक टेबल में जो ट्रायड्स डेवरनियर क्या बताया था, तो वो उसका जो ट्रायड्स बनाया था वो थ्री एलिमेंट्स का, सो बेसिकली थ्री एलिमेंट्स लेके एक ग्रुप बनाया था। वो उसका कंडीशन क्या था, जो एक जो ट्रायड होगा उसका जो फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का जो एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट होगा, तो उसका एवरेज जो आएगा तो वो मिडिल आएगा। सो मिडिल का जो एटॉमिक मास वो आएगा। तो यहाँ पे ये देखते हैं, सो वेदर नो हम ये जो दो ग्रुप और ट्रायड्स दिया गया है तो इसका हम ट्रायड बता सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो जो पहले वाला देखेंगे तो यहाँ पे जो एटॉमिक वेट और द एटॉमिक मास ये दिया गया है, तो हम इसको ये वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे सोडियम का ये है 23, और जो लास्ट है क्लोरीन उसका कितना है 35। तो जो एवरेज कितना आएगा, सो बेसिकली वी आर हैविंग नो 58। तो 58 divided by 2, so basically we have to take average, so this will be our no 20 sorry 29. Okay, so now if we see the silicon, so basically it is 28, which is pretty much close to this, but if we think about this, so basically in the triads, if you could remember, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो ये जो तीन था ये हेलोजन ग्रुप का था। ठीक है, तो उसका जो प्रॉपर्टीज वगैरह जो होता है जो ट्रायड का वो सेम रहता है। जैसे और एक हम लेंगे जैसे लिथियम सोडियम पोटासियम, ये जो ट्रायड्स था तो उसमें क्या था, जो थ्री एलिमेंट जो था तो उसका जो प्रॉपर्टीज है वो एक ही जैसा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एवरेज जो एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल एलिमेंट तो वो लगभग एक ही जैसा आ रहा है, जैसे 28, इट प्रीटी मच क्लोज टू 29, close to 29, but now the
properties of these elements are very different, because we know the chlorine is halogen group, and this is, we know this is a metalloids and this is a metal. So basically they are having very different, और ये सब का जो properties है अलग properties है, तो इसको हम triad बता नहीं सकता. So this is not a triad. ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो है तो वो ट्रायड नहीं है. लेकिन हम जब सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे तो उसका क्या है, बेरिलियम ये है, एटॉमिक वेट 9 है, और जो कैल्शियम है नो 40 है, तो उसका जो टोटल कितना हो रहा है 49. सो इफ यू टेक द एवरेज 49 डिवाइडेड बाय 2, सो दिस इज विल बी लाइक ए 24.5. So this is pretty much close to the atomic weight of magnesium. तो ये क्या हो रहा है, लेकिन अब देखेंगे तो क्या हो रहा है, जो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, दे all are alkaline earth metal. So basically they are having very similar properties, so we can call this is a triads according to the Debrunier method. ठीक है, तो ये जो है, तो जो फर्स्ट जो ग्रुप है तो उसको ट्राइड बता नहीं सकता, क्योंकि वो जो एलिमेंट्स है ये सब का प्रॉपर्टीज अलग है. लेकिन जो सेकंड जो एग्जांपल है तो ये सब का जो प्रॉपर्टीज है अल्कलाइन अर्थ मेटल, एंड इट इज नो द average atomic weight of the middle element. So basically the atomic weight of middle element is the average of first and the last element. ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया कैसे करना है. Then we are having, this is the first two questions, it will appear in the section A. Now this will be in the section B question. So the first, the questions it is asking, it is from periodic table. क्या पूछ रहा है यहाँ पे, एग्जामिन द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड में जो एलिमेंट्स है यहाँ पे दिया गया है, तो वो है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, phosphorus, sulfur, chlorine and argon, and answer the following questions. Questions क्या है, choose the metals and non metals out of this element. तो यहाँ से जो मेटल और नॉन मेटल पता करना है. कैसे, हम लोग को तो पता है जो सोडियम जो है वो फर्स्ट अल्काली मेटल, और मैग्नीशियम जो है सेकंड ग्रुप में है अल्कलाइन अर्थ मेटल, और हम लोग को पता है जो एल्यूमिनियम हम हर दिन यूज करते हैं, जैसे बर्तन वगैरह जो होता है वो भी मेटल है. ठीक है, तो ये जो है थ्री, these three are metal. So basically if we think, so basically this is the sodium, magnesium and aluminum are metal. And in the previous questions we learned basically silicon is not a metal, so basically it is having the metal and non-metal properties. So we'll see in the next question. So basically it is the metalloid. Okay, then the non-metals are, we know the right side element of the periodic table. जैसे ये है जो आर्गन है, ये इनर्ट गैस है, ये नॉन मेटल है. और जो क्लोरीन हेलोजन है, हेलोजन गैस और हेलोजन सीरीज जो है ये भी गैस है, नॉन मेटल है. और सल्फर, द फास्फोरस, these are also non metal. Okay, so I think you can now easily you can remember the periodic table. So basically this phosphorus, sulfur, chlorine and argon. So these are the elements present in the right side of this periodic table. So you can see the right sides are, we know, the non-metals, and left side these elements are metal. Okay, so this is what actually the questions in the second questions, on which side of the periodic table we locate the metal and non-metal. So हमने पहले भी discuss कर दिया है. Hello students. So basically I hope you are enjoying the class or session. So basically already हमने discuss किया है जो last जो लेफ्ट साइड पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में जो आएगा तो वो मेटल आएगा, और राइट साइड जो एलिमेंट्स आएगा वो नॉन मेटल आएगा. सो अगेन, नेम द मेटालॉइड आउट ऑफ द एलिमेंट्स गिवन अबव. why they are where are they located at the periodic table. तो हमको पता है ये जो पहले बताया गया है, इसमें जो है सिलिकॉन ये मेटालॉइड है, इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का
प्रॉपर्टीज रहते हैं, तो इसको इसलिए मेटालॉइड बताते हैं। और ये जो पोजीशन है मेटालॉइड का, ये इन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल में रहता है। जैसे और भी एग्जांपल, जैसे नो बोरॉन, silicon, these are like this germanium and no arsenic, antimony. So these are the metalloids, and they are having the properties, no, both kind of properties like metal and non-metal. So इसीलिए क्या होता है, वो मेटल और नॉन मेटल दोनों का बीच में रहता है इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस। तो हमारा जो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यहाँ पे शायद एक क्वेश्चन जो आएगा जो इंटरनल चॉइस में आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ऑप्शंस है, जो आइदर द फर्स्ट वन और द सेकंड वन, सो विल टेक वन बाय वन। सो लेट फर्स्ट डिस्कस विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बताया जाते हैं, तो क्या पूछते हैं, जो व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स एंड राइट द नेम and general formula of these are the saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon, and also draw the structure of one hydrocarbon each। तो उसमें क्या होता है, जो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो हमने पहले जो डिस्कस किया है हाइड्रोकार्बन, सो बेसिकली हाइड्रोजन एंड कार्बन से जो कंपाउंड बनता है, तो उसी को बताते हैं हाइड्रोकार्बन। सो हाइड्रोजन hydrogen and carbon based compounds are known as hydrocarbon। ठीक है, तो ये जो है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जहाँ पे जो जनरल फार्मूला होता है, जो एल्केन होता है CnH2n+2, ये है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसेचुरेटेड क्या होता है, जहाँ पे जो हम और भी हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, जैसे एल्कीन, एल्काइन, तो वो है CnH2n, ये है एल्केन, एल्केन, और ये है एल्कीन और एल्काइन जो है CnH2n-2। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी लेना है, उसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है। जैसे हम फर्स्ट जो एग्जाम्पल लेंगे, तो n=1, सो बेसिकली दिस इज आवर मीथेन। इफ वी हैव n=1, so basically C=1 and H will be 4, this will be the structure of methane। And the unsaturated hydrocarbon, if you start, this is your this is your methane, and this is your ethene। इथेन, तो यहाँ पे क्या होता है, एक डबल बॉन्ड रहता है, तो सी डबल बॉन्ड वी आर हैविंग, दिस इज द स्ट्रक्चर। सो बेसिकली दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, एंड द एसिटिलीन, दिस विल बी आवर the unsaturated, and the alkene, so basically this will be ethine, and this is the structure। Okay, so if you take n=2, so basically this will be C2H2, and this will be again C2H4। क्योंकि यहाँ पे जो होता है डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड रहता है, तो इसीलिए क्या होता है, एटलीस्ट वी नीड 2 carbon। So without at least 2 carbon, we need to get unsaturated hydrocarbon or alkene or alkyne। और जो लास्ट जो क्वेश्चन है, ऑल्टरनेटिव जो क्वेश्चन है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो है, व्हाई आर होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड सो कॉल्ड। ठीक है, एंड राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ 2 consecutive number of homologous series, and state the part of these compounds that determines the physical properties and chemical properties। So basically already we discussed about the homologous series of carbon compounds in the, so basically they are having same general formula. Here let's take an example again for the alcohol. So this is if we take HN as CnH2n+1 OH, so basically this is the general formula। यहाँ पे क्या होता है general formula, तो ये जो होता है हम n=1 और n=2
CH3 CH2OH, ऐसा CH3 CH2 CH2OH, ऐसे ये लेंगे तो क्या होगा। तो इसमें जो है ये होमोलोगस सीरीज है। यहाँ पे क्या होता है होमोलोगस सीरीज में, सो एक्चुअली अगेन दे आर नो डिफर ओनली विद द CH यूनिट CH2 यूनिट। तो इसमें क्या होता है जो 14 यूनिट मास और एटॉमिक यूनिट मास में डिफरेंस रहता है। और क्या होता है जो ये जो कंपाउंड है इसका जो जनरल सिंथेटिक प्रोसीड्यूर और जो प्रॉपर्टीज है वो एक ही जैसा रहते हैं। ओके, सो दैट इज व्हाई दे कॉल्ड द होमोलोगस सीरीज। सो वी कैन मेक दोस compounds in a same procedure and their general formula is same and the properties basically they show, so that depends on the functional group, and this is what they are asking. So physical properties and chemical properties. So the chemical properties it is governed by the functional group, और जो कंपाउंड है होमोलोगस सीरीज का जो कंपाउंड रहता है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो वो फंक्शनल ग्रुप ही केमिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करेगा, वो बताएगा जो कैसे है। सो केमिकल प्रॉपर्टीज नो केमिकल प्रॉपर्टीज इट इज डिटरमाइंड बाय द फंक्शनल ग्रुप ओके। एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज एक कौन सा करेगा जो हाइड्रोकार्बन पार्ट। सो बेसिकली हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन जो पार्ट है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे नो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ओके एटसेट्रा। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज, सो दैट विल बी डिटरमाइंड बाय दिस हाइड्रोकार्बन पार्ट एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज इट विल बी रिफ्लेक्टेड बाय द फंक्शनल ग्रुप। Okay, so these are the chemistry part. I hope you the things are clear to you. Now we'll discuss about the physics part and our physics teacher. So now he will discuss the things. I hope you enjoy the session and thank you. And let's welcome Umsu sir for this discussion. Okay, sir. Thank you. Yes, sir. Hello everyone, welcome to Education World. I am Ishu Tiwari, your physics faculty member at Education World. तो प्यारे बच्चों, जैसा कि अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मतलब कि जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, हमारा पार्ट जो स्टार्ट होने वाला फिजिक्स से। चलिए फिजिक्स से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फिजिक्स वाला पार्ट स्टार्ट होता है फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, डिस्कस करते हैं। तो बच्चों ऐसा कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है how would how would the strength of magnetic field due to current carrying loop the affected if। ठीक है, तो क्या क्या इफेक्ट पड़ता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो सिचुएशन दी है हमें, कंडीशन दी है उसने क्वेश्चन में, रेडियस ऑफ द लूप इज रिड्यूस टू हाफ इज इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू क्या कर दी, हाफ कर दी। ठीक है, तो ओरिजिनल वैल्यू की हाफ कर दी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं बी इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन, अगर यहाँ पर लूप की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 2r। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ठीक है, अब 2r फॉर्मूला हो जाएगा, लेंथ क्या कर दी, r कर दी, यानी कि b डैश इक्वल टू म्यू नोट आई 2 अपॉन r बाई 2। ठीक, सॉरी r बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल नहीं करना हमें, ये आ जाएगा 2 म्यू नोट आई अपॉन 2r, 2 म्यू नोट आई अपॉन 2r। तो बेटा इसको कंपेयर करो किससे, इससे, तो बी डैश कितना हो गया, 2b हो गया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया आपका, डबल हो गया। क्या हो गया बच्चों, डबल हो गया। क्लियर है बात। ठीक है, अब सेकंड बोलता है हमसे क्वेश्चन में, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि स्ट्रेंथ ऑफ करंट थ्रो द लूप इज डबल। ठीक है बेटा, प्लीज फोकस करिए क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन समझिए। ठीक है, और मेरे अगर आप ये वीडियो देखोगे इस चैप्टर के, तो मैंने ये टॉपिक भी कवर करा हुआ है उसमें। सेम क्वेश्चन है, अभी कल की बात है, कल ही मैंने इस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था लाइव आकर। तो आप लोग जाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्ट 2, क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्ट 2 में जाकर इसका कॉन्सेप्ट भी पढ़ सकते हो, मैंने पढ़ा रखा उसमें। स्ट्रेंथ ऑफ करंट थ्रू द लूप इज डबल, अगर डबल कर दिया जाए करंट, तो जैसे जानते हैं हम B इक्वल टू
म्यू नॉट आई, करंट डबल मतलब बी और आई क्या है एक दूसरे के डायरेक्टली बेटा प्रोपोर्शनल है। अगर करंट डबल कर दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, डबल। ठीक है, क्योंकि बी और आई एक दूसरे क्या है, देखो यही फॉर्मूला लगाया मैंने, बी इक्वल टू बी प्रोपोर्शनल टू आई, एंड आई डबल करेंगे तो बी भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कल ही पढ़ा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पढ़ने सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, क्योंकि एग्जाम में आपकी चॉइस है कौन सा आपको करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोनों करने, क्योंकि और लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि अगर ऊपर वाला आता है तो ऊपर वाला करिए, नीचे वाला आता है नीचे नीचे वाला करिए। लेकिन मैं अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं एग्जाम में होता और मेरे को अगर पेपर देना होता तो मैं ऊपर वाला पोर्शन अटेम्प्ट करता, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन जो है वो इजीली कॉन्सेप्ट वाइज में समझा सकता हूँ बहुत आसान तरीके से, लेकिन नीचे वाला भी इतना टफ नहीं है। ठीक है, तो नीचे वाला देखो हम करते हैं। The current carrying solenoid when suspended freely rest along a particular direction। ठीक है, चलिए रेस्ट की बात कर रहे हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन पे। चलो, जैसा कि हम जानते हैं कि सोलेनोइड, चलो इसके लिए हम क्या करते हैं, सोलेनोइड को बना ही लेते हैं। हमने एक सोलेनोइड बना ली। इस सोलेनोइड को क्या करा हमने, सोलेनोइड एक तरफ से किस तरह बिहेव करेगी, ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ठीक है, ये इसका नॉर्थ है, ये इसका साउथ है। ठीक है बच्चों, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। जब हम इसको एक स्ट्रिंग से हैंग करेंगे, लटकाएंगे, ठीक है, तो इसके पास अगर कोई मैग्नेट होगी, जैसे मान लीजिए अगर कोई इसके आसपास कोई मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है उस मैग्नेट का, ठीक है, तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, डिफ्लेक्ट होगी अट्रैक्शन की वजह से, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। मगर कोई मैग्नेट नहीं है, तो इसका मतलब जैसा कि आप लोगों को पता है अच्छी तरह से कि अर्थ भी क्या है, हमारी एक मैग्नेट है। अर्थ क्या है बेटा, हमारी एक लाइक अ मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो अर्थ का जो साउथ होगा वो क्या करेगा, नॉर्थ की तरफ बिहेव करेगा, और नॉर्थ वाला ये जो अर्थ है का ये साउथ, तो इसकी वजह से क्या हो, डिफरेंट होगा। लेकिन रेस्ट पर कब होगा कि जियोग्राफी जियोग्राफिकल जियोग्राफिकल ये जो नॉर्थ है वो किसका बिहेव करे, साउथ की तरफ बिहेव करे। जियोग्राफिकल अर्थ का साउथ पोल, नॉर्थ पोल जो है वो साउथ की तरफ बिहेव करे, और ये किस तरह साउथ पोल किस तरह बिहेव करे, नॉर्थ पोल की वजह से, जिसकी वजह से क्या होगी, ये डिफ्लेक्ट नहीं होगी, कैसी हो जाएगी, रेस्ट हो जाएगी बच्चों। ठीक है, चलते आगे। अब आती है, देयर इज आइदर अ कन्वर्जेंस और अ डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, नियर द एंड्स ऑफ अ करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनोइड। अरे बेटा देखो, डाइवर्जेंस का कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है, पास आना। डाइवर्जेंस का मतलब दूर जाना। बच्चों एक बात का याद रखना कि जब मैग्नेटिक लाइन पास आती है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंग है। ठीक है, वहां मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा, स्ट्रोंग है। और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर जाती है, मतलब कि डाइवर्ज होती है, इसका मतलब वहां मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वीक है। चलो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, फिर एक सोलेनोइड बनाते हैं। सोलेनोइड बना दी, ठीक है, और इस सोलेनोइड को इस तरह से रखते हैं कि ये तो क्या इसका नॉर्थ है और ये क्या इसका साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किस तरह से, इस तरह से होगी। ठीक है, किस तरह से होगी, इस तरह से होगी। ठीक है, तो आप ही देखोगे जो उसके जो यहाँ पर जब पास पास है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वहां क्या है, वहां पर फील्ड क्या है, स्ट्रोंग है, और जहां पर दूर है वहां क्या है, फील्ड वीक है। ठीक है, तो ये हमारा कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस हो गया। चलते आगे, अगला सवाल। चलिए, ये बहुत अच्छा सवाल है, समझते हैं इस सवाल को। सबसे पहला काम हम सवाल को पढ़ेंगे। देखो, फिजिक्स के अंदर जब भी आप लोग पेपर सोल्व करो, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि कभी भी आप अगर पेपर सोल्व करते हो तो कम से कम एक सवाल को कम से कम 2 बार पढ़ा करो फिजिक्स का, कोई भी न्यूमेरिकल हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जल्दबाजी में सोल्व करते हैं। और देखो, एग्जाम जो होता है, एग्जाम के अंदर जो हम क्वेश्चंस आंसर्स निकालते हैं, हमारे हिसाब से सब सही होता है, लेकिन हमारे हिसाब से सही हो इसका मतलब थोड़ी है एग्जामिनर के हिसाब से सही होगा। तो 2 बार सवाल पढ़िए आप। तो सवाल पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंस ड्रॉ अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर when the voltage is 200 volt, calculate the amount of charge flowing
थ्रो इन इट इन 1 आवर। तो 1 आवर में कितना चार्ज फ्लो होगा वो चार्ज हमें फाइंड करना है। फर्स्ट तो ये है, ठीक है, यानी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है सर यहाँ तो। सेकंड, अ करंट 10 एम्पियर फ्लो थ्रो अ कंडक्टर फॉर अ 2 मिनट, ठीक है। इसके अंदर जो हमें फाइंड करना है बी वाले पार्ट में, क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज पासेड एनी एरिया ऑफ पोजीशन ऑफ द कंडक्टर। यानी यहाँ पे हमें क्यू फाइंड करना है। इफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रो 1.6 10 के माइनस 19 द कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग, यानी क्या किया हमें एन फाइंड करना है बच्चों। देखो ऐसा इसलिए करा मैंने, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, ठीक है। ऐसा इसलिए करा मैंने, इसका रीजन ये है क्योंकि मुझे पता होना चाहिए मुझे फाइंड क्या करना है, ठीक है। कोई भी चीज क्यों, कोई भी एग्जाम जो होता है, जब भी आप कोई एग्जाम देते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला टारगेट क्या होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि उस एग्जाम के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कितने कितने क्वेश्चन बनते हैं हर चैप्टर से, तभी तो हम एग्जाम देने जाएंगे। डायरेक्ट एग्जाम देने थोड़ी जाएंगे। सबसे पहले मैंने सवाल करा, सवाल के अंदर मैंने ये पता लगा लिया मुझे करना क्या क्या है और क्या क्या फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो पहला पॉइंट सोल्व करते हैं, फर्स्ट पॉइंट सोल्व करते हैं अपन इसका ए, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं हमें आई दे रखा है इसमें 0.4 एम्पियर और वोल्टेज दे रखा है पोटेंशियल 200 वोल्ट, ठीक है भाई। हमें चार्ज फाइंड करना है इन 1 आवर में, टाइम दे रखा है 1 आवर। 1 आवर में होते हैं बेटा 1 मिनट, 1 आवर में होते 60 मिनट, 1 मिनट में होते 60 सेकेंड, यानी कि 3600 सेकेंड। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम चार्ज की बात करें तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी एंड क्यू इक्वल टू आई टी, ठीक है। तो आई कितना 0.4, टी कितना 3600, ठीक है। तो Q इक्वल टू पॉइंट हटाया, जीरो लाया, जीरो जीरो कैंसिल करा, कितना आया, Q इक्वल टू हम बात करें 4 से करा 6 को 24, 2 गया 12 और 2 14, ठीक है। 14 14 और एक जीरो और आएगा कुलम, यानी कितना चार्ज है बेटा 1440 कुलम चार्ज, ठीक है। 1440 कुलम चार्ज, ठीक है। तो फर्स्ट वाला तो आंसर आ गया। अब सेकंड की बात करते हैं। जब 10 एम्पियर फ्लो हो रहा हो तो बताओ 2 मिनट्स के अंदर, कितने मिनट में, 2 मिनट में, ठीक है। क्या बताओ, कैलकुलेट द चार्ज बताओ, ठीक है, चार्ज बताओ। चलो भाई बी का फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। वही कहानी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी एंड क्यू इक्वल टू आई टी, एंड आई बोले तो 10 एम्पियर और टी बोले तो टी 120 मिनट, 120 मिनट सॉरी नहीं 2 मिनट है, 2 मिनट बोले तो 120 सेकेंड। तो कितना आ गया, आंसर आ गया हमारा 1200 कूलम, ठीक है। ये आ गया। अब इसमें ही बताओ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, तो Q इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल क्यू माना है ना अपने एन ई, और एन बोले तो Q बाई ई, एंड Q बोले तो 1200, एंड ई बोले तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, एंड एन 1200 इंटू 10 की पावर 19 अपॉन 16 1.6, ठीक है। चलो सोल्व कर देते हैं, एन इक्वल टू 1200 नहीं करेंगे ना, ठीक है। ये दो जीरो इधर थोड़ा अच्छे से, 12 इंटू दो जीरो इधर ही गया तो 10 की पावर 21 हो गया, बिल्कुल सही सर, ठीक है। चलो एक जीरो मान लेते हैं इधर, ठीक है, क्योंकि इसकी भी आएगी ना पॉइंट की, ये पॉइंट आओगे तो इधर जाएगा 10 की पावर 21, ठीक है। तो अपॉन 16, ठीक है। तो एन इक्वल टू कितना 6 7 7.5 हुआ है ना, 0 80 0 8 8 7 120, हाँ हाँ, ठीक है। 10 की पावर 21 इलेक्ट्रॉन, अरे इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, कितना करेगा 7.5 इंटू 10 की पावर 21 इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, ठीक है। ये आगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया। तो देखिए हमने एक क्वेश्चन और सोल्व कर लिया। चलते हैं हम अगले सवाल पर। अगला सवाल आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, न्यूमेरिकल, ठीक है। अरे न्यूमेरिकल है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लोइंग सर्किट, ठीक है।
अगर हम इसकी बात करें, फाइंड द फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लोइंग सर्किट, निकाल लेते हैं, पहला वाला पार्ट सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट देखो, जगह भी है हमारे पास जगह भी है सोल्व करने के लिए अच्छी खासी, तो हम जगह का भी यूज करेंगे, बिल्कुल करेंगे। चलो भाई, लगाओ तिगड़म, तिगड़म लगाते हैं, इक्विवेलेंट फाइंड करना है सर। फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं, ये जगह बना ली, ये हमने एरिया बना लिया भाई, इस एरिया में सोल्व करेंगे हम इस फर्स्ट क्वेश्चन को। तो सोल्व करने से पहले जैसा कि वो आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है प्यारे बच्चों, आर इक्विवेलेंट हमें फाइंड करना है। तो आर इक्विवेलेंट फाइंड करें, चलो करते हैं सर। तो माना इस V वोल्ट के बैटरी के अंदर I करंट फ्लो हो रहा है, तो I गया इधर, I गया इधर, I गया इधर, मतलब 3 में जो I जाएगा वो 3I में जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर। ये कुछ इधर गया, अरे ये डिवाइड हो गया, ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अरे डिवाइड हो गया, इसका मतलब कि मैंने बताया था, मेरा एक लेक्चर है यूट्यूब पर, ठीक है, यूट्यूब पर एक लेक्चर है, आप हमारे चैनल से उठा लेना, वो पढ़ लेना, उसमें मैंने पैरेलल और सीरीज का क्वेश्चन कराया था। और मैंने उस दिन एक बात बोली थी कि इससे क्वेश्चन आएगा, देख लो आ गया, सैंपल पेपर में दे रखा है, इसका मतलब आया था तो आएगा, 100% आएगा। तो देखो ये बन गया पैरेलल। फिर आगे कहानी बढ़ती है, दोनों ये इन दोनों का संगम हुआ यहां पर, ये दोनों यहां मिले और मिलकर फिर आगे बढ़े, लेकिन यार ये फिर इनके बीच में क्या आ गई, दीवार। दीवार का मतलब वो दीवार नहीं, दीवार मूवी, यह दीवार का मतलब है कि इनको डिवाइड कर रही है, यानी कि इनको बांट रही है। ये बांटा बांटा बांटा, फिर इधर से बांटा, फिर दोनों यहां मिले, फिर यहां आए, फिर यहां गए, फिर यहां गए, और नियम अनुसार, रूल्स के अनुसार कि पॉजिटिव से निकलकर कहां आ गए, नेगेटिव में आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। ये सब हमने नहीं, बुक में भी लिखा हुआ है, अपने तो बोला ही है, बुक में भी लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक इंडाइशन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ऐसा करते हैं, जो पैरेलल में थे उनको सीरीज में कन्वर्ट कर लेते हैं और एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना देते हैं बच्चों। तो बनाया, ये 2 2 2, ये 1 1 1, ठीक है, इनकी कहानी। तो ये पैरेलल है, तो पैरेलल 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। 1/2 बोले 1/2, आधा आधा बोला एक, आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 1, ठीक है। तो 1 1, ये भी दोनों किसमें आ गए, ये भी आ गए किसमें, 1 1, तो क्या हो गया, 1 1 1, तो 1 आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1 कितना हो गया, 2। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 1/2, ठीक है। ओके बच्चों, चलते हैं आगे। चलो अब बनाते हैं एक सर्किट। ये 3 था, ये 2 2 मिलकर क्या बना, 1 बना सर, ठीक है। फिर 1 1 मिलकर क्या बना, 2 मिला, 2 बना। फिर ये गए, अरे पर इधर भी तो एक रेजिस्टेंस हाँ है, ये बन गया बहुत ही एक प्यारा सा सुशील सुंदर रेजिस्टेंस, ये की भी बना दी, चाबी, काम हो गया बिल्कुल। अब आई जब जाएगा तो उसके बीच में कोई भी दीवार नहीं होगी, यानी कि वो नहीं बटेगा। तो आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है सर हमें, तो भैया कर दो। तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 3 प्लस 3 R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो R1 इक्वल टू 3, R2 इक्वल टू 3, R3 इक्वल टू 1, R4 इक्वल टू 2। तो 3 3 6 1 7 2 9, कितना आया, 9 ओम आ गया, हमारा आंसर सही है। ठीक है बच्चों, तो अगला और वाला क्वेश्चन भी अब हम सोल्व करेंगे बच्चों, तो करते हैं सोल्व, ठीक है। तो करते हैं सोल्व। टू वायर A and B are of equal length and have equal resistance, ठीक है। दो वायर है A and B, if the resistivity of A is more than B, which wire is थिकर एंड वायर, ठीक है। कौन सा वायर
मतलब कि ठीक है का मतलब क्या होता है, मोटा होगा कौन सा, पतला, और क्यों। ठीक है, तो बेटा अब हम बात करते हैं आगे। तो इसके अंदर टू वायर है, टू वायर है। तो ए एंड बी टू वायर है, ए एंड बी टू वायर है, दोनों की लेंथ क्या इक्वल है। अगले पेज में कर देते हैं इसको। ये भी एल, ये भी एल। ठीक है, ठीक है, दोनों वायर थी। इफ द रेजिस्टिविटी ए इज मोर, ठीक है, रेजिस्टिविटी ए की, ए क्या है, ज्यादा है। ठीक है, रेजिस्टिविटी ए क्या है, ज्यादा है, और देन बी की कम है। बेटा पहली बात तो रेजिस्टिविटी पर, रेजिस्टिविटी पर जो वायर की जो मोटाई है वो डिपेंड नहीं करती। ठीक है, फर्स्ट ये चीज हो गया, डिपेंड ही नहीं करती, क्योंकि आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। तो आर जो जो भाई अगर हम बात करें, नहीं करेगा, डिपेंड ही नहीं करेगा। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। करंट इन ईच रजिस्टर, ठीक है, हर एक रजिस्टर में करंट फाइंड करना है। टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, कितना करंट गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो करंट इन ईच रजिस्टर, ईच रजिस्टर में करंट फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, 30 10 5, ये बन गया। 6 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, ठीक है, 6 वोल्ट की 30 10 5 हो गया। सबसे पहले करंट फाइंड करना है, इस रेजिस्टेंस में टोटल करंट फाइंड करना है, बैटरी से निकला हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल करंट फाइंड करना पड़ेगा, तभी तो ईच पता लगेगा। तो चलो ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। चलो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले फाइंड कर लेते हैं। तो तीनों क्या है, पैरेलल में है। तो फर्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 5। ठीक है, तो इसका एलसीएम लिया तो कितना आया, 30 10 और ये 5। तो 5 से गया ये 6, ये गया 2, ये गया 1, 2 से गया ये 3, ये गया 1, ये गया 1, ये गया 3, 5 2 10 10 और 3 30। ठीक है, तो ये 30, 1 प्लस 3 प्लस 6, सो 9 10 10, 30 बटे 10, यानी कि 3 ओम। कितना आंसर आया पहले का, 3 ओम आंसर आएगा। मैं लिख देता हूँ उधर ही, ठीक है ना। कितना आंसर आया इस वाले का, अरे यार कहा गया, हाँ इक्वेशन 3 ओम, ये तो इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला, अगला क्या पूछा इसने, टोटल करंट फाइंड कर लेते हैं पहले, सेकंड वाला। तो आई बोले तो वी अपॉन आर, वी बोले तो 6, आर इक्विवेलेंट बोले तो 3, यानी कितना आ गया, 2 एम्पियर। इस सर्किट में फ्लो होना टोटल करंट कितना है, 2 एम्पियर। कितना, 2 एम्पियर। तो देखो ये भी आ गया, बैटरी से निकलना टोटल करंट 2 एम्पियर। थर्ड आता है ईच रेजिस्टेंस में कितना गया, यानी कि अगर हम बात करें यार 2 गया तो इधर क्या आएगा, i1 इधर जाएगा, i2 इधर जाएगा, i3। अरे करंट डिवाइड, लेकिन पोटेंशियल क्या होता है इनमें, सेम होगा, v1 v2 और v3, यानी कि v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v3, यानी कि 30 i1 इक्वल टू 10 i1 इक्वल टू 5 i1, और यह कितना, 6 i1। ठीक है, 6 i1 इक्वल टू 5 i3 ना, हाँ, 2 i2 इक्वल टू i3। ठीक है, और यही पता है मुझे i1 प्लस i2 प्लस i3 इक्वल टू कितना, 2 ओम होगा, बिल्कुल होगा सर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 6 i1 इक्वल टू 2 i2, तो i2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, 6 i1 से 6 i1 अपॉन 2, यानी 3 i1, कितना, 3 i1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम 6 i1 इक्वल टू i3। ठीक है, तो i3 की जगह 6 i1 लिख सकते हैं। तो चलो निकाल लेते हैं वैल्यू। ठीक है, तो i1 प्लस 3 i1 प्लस 6 i1 इक्वल टू 2, 6 3 9 और 10। ठीक है, 10 हो गया ना, 10 i1 इक्वल टू 2, तो i1 इक्वल टू 0.2 एम्पियर। ठीक है, तो i1 0.2 आ गया, यानी 2/10 आ गया। तो i2 कितना आ जाएगा हमारा, i2 आ जाएगा हमारा 0.6। ठीक है, 0.6 आ जाएगा, और i3 कितना आ जाएगा हमारा, i3 आ जाएगा हमारा 1.2।
तो कितना हो गया 1.2 और 0.6 1.8 और ये 0.2 मतलब कि 2 एम्पियर, मतलब हमारा आंसर सही है बच्चों। तो ये हमारा क्या है, आंसर आ गया। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारा फिजिक्स का पार्ट हो गया कंप्लीट। अब जो पार्ट डिस्कस करेंगे, सर डिस्कस करने वाले हैं, वो है बायो का पार्ट। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। Hello, good evening to all the participants in the session. And today, as you know, that we are going through the CBSE sample paper, and we are discussing the most expected questions today. And today, I will deal with the biology section of your CBSE sample paper. So you may see the question number 3, part A. How is the process of pollination different from fertilization? So keep in mind, pollination and fertilization, these are the two important events during reproduction, especially during the sexual reproduction. Pollination involves the transference of pollen grains from anther or stamens up to the surface of female reproductive organ, and that is known as gynecium. It means that the pollination is nothing else. It is only a process of transfer of pollen grains from the stamens up to the gynecium area. That is referred with the name of pollination. That is called as pollination process. But if we talk about fertilization, fertilization is the process of fusion of male as well as the female gametes. That is, if male gamete fuses with the female gamete, the process of their union, it is referred with the name of fertilization. That is referred with the name of fertilization. And keep in mind, fertilization is also referred with the name of syngamy. The male gamete in case of plants, it is referred with the name of pollen grain, whereas the female gamete in case of the plants, it is referred with the name of egg or ovule. And likewise, in case of animals, the male gamete is referred with the name of sperm or spermatozoon, and the female gamete is referred with the name of egg or ovum. It is referred with the name of egg or ovum. The female gamete in case of animals, it is referred with the name of ovum, or it is referred with the name of egg. Whereas the male gamete in case of the animal, it is referred with the name of sperm. And the union of sperm and egg, it is referred with the name of fertilization, and fertilization results into the formation of a single celled structure, which is referred with the name of zygote. So hence, what is the main difference in the process of pollination and fertilization? Pollination involves the transference of pollen grain from the stamens up to the stigma or up to the receptive surface of gynecium, whereas the fertilization is the process of union of male as well as the female gametes
to form the single-celled structure which is known as zygote. Then refer to the part B of question number 3. State the mode of reproduction in earthworm, frog, rhizopus and Plasmodium. So in case of earthworm, we basically see the process of sexual reproduction. There is a sexual reproduction in case of earthworm. And keep in mind the earthworm is bisexual animal. It is bisexual animal, but it shows the process of cross fertilization. I want to say, if the earthworm is bisexual, it is having both male as well as the female sex organs. But there is a difference in the time of maturity of male as well as the female sex organs. Therefore, the same earthworm cannot show a self-fertilization phenomenon. The two earthworms have to be come together in order to perform the process of sexual reproduction. In case of earthworm, sexual reproduction is the mode of reproduction. In case of the frog, likewise, we can report the process of fertilization is sexual. And frog is, keep in mind, the frog is unisexual animal. It liberates the gametes, that is, the male frog liberates the sperms into the water body, followed by the liberation of eggs by the female in the water or pond, and then within the water, external fertilization takes place, and external fertilization lead to the formation of zygote. That is in case of the frog also, sexual reproduction takes place. And the third important organism which is given here, that is a rhizopus. Keep in mind the rhizopus is not an animal or a plant. It is basically a fungus. It is basically a fungus and it is commonly called as black bread mold. It is a fungus and it is known as black bread mold. In case of fungi, the process of reproduction takes place both through sexual as well as asexual reproduction. That is, I want to say, in case of rhizopus, the mode of reproduction is both asexual as well as sexual. Asexual reproduction takes place through the formation of spores which are known as asexual spores, such as spongiospores, whereas a sexual reproduction takes place through fusion of hyphae. The filamentous structure of rhizopus, which are formed for the purpose of reproduction, these are called as zygophore hyphae, and zygophore hyphae, these are show the process of fusion for the sexual reproduction. That is, the sexual reproduction takes place through the fusion of zygophore hyphae, whereas the asexual reproduction takes place through the formation of spores like spongiospores. Then the next important animal given here, that is a Plasmodium. The mode of reproduction in case of the Plasmodium is primarily asexual. Okay. And sexual reproduction may be there in the body of the host. Plasmodium is commonly called as malarial parasite. And it has two different hosts. One is the man and the second is the mosquito. Keep in mind, in man, primarily the sexual reproduction takes place. Whereas in case of mosquito, the asexual reproduction takes place. Asexual reproduction takes place through the formation of spore-like structures, whereas a sexual reproduction involves the fusion of male as well as the female gametes. So hence we can say, in case of the Plasmodium, the primary mode of reproduction is asexual, and that asexual mode of reproduction in the Plasmodium is through multiple fission. Specifically, in the Plasmodium, we can say asexual reproduction takes place through multiple fission. Multiple fission is one of the category of asexual mode of reproduction. So hence we completed the discussion on question number 3. Difference between pollination as well as the fertilization, and
the various modes of reproduction in the given animals such as earthworm, frog, rhizopus, and plasmodium. Now let's move to the question number 4, part A. List the sexually transmitted diseases. So sexually transmitted diseases, these are also referred with the name as STD or VD. Okay, VD means venereal diseases. These are also known as venereal diseases, or these are also known with the name as sexually transmitted diseases. And one of the important sexually transmitted disease is referred with the title name as HIV infection, which is also referred with the title AIDS. AIDS stands for acquired immunodeficiency syndrome, and it takes place through sexual context. That is one of the reason for cause of AIDS is the sexual contact between the infected person and the healthy one. The second important sexually transmitted disease is gonorrhea. It is caused by bacteria which is called as Neisseria. Gonorrhea. This is the name of the bacteria which is responsible for causing the disease which is called as gonorrhea. And the third important STD is known as syphilis. Okay, I have given the 3 examples for sexually transmitted diseases. One is the HIV and AIDS, which is very, very common. Second is the gonorrhea, and the third one is syphilis. And keep in mind, STD basically takes place due to the sexual contact between infected and the healthy person. Then question number 4th part B. Mention any one method that should be adopted both by male as well as a female for safe sex. And primarily the various methods which are employed in order to have the safe sexual contact. These are referred to the name of contraceptives. And one of the kind of the contraceptives, they include diaphragms. In addition to that, we have the vaults, then chemical barriers, and lastly, we can say the male as well as the female condoms. That is a number of devices they are available in order to have the safe sex between male as well as a female, and these devices they are referred to the name of contraceptives. They include the diaphragms, vaults, chemical barriers like creams and jellies, and condoms. Then the next question is how the Mendel experiment show that traits may be dominant or recessive. This is a part A. And part B is inheritance of 2 traits is independent of each other. So Mendel, we know that known with the name as father of genetics. Mendel is referred with the name of father of genetics. And he performed a number of experiments on plant. The plant selected by the Mendel for the cross experimentation, that is known as a garden tea plant, which is botanically referred with the name of Pisum stymum. Okay, this is a botanical name of the plant on which the Mendel worked. And when the Mendel performed the experiment on the Pisum stymum, then he reported that some plants they are having colored flowers, whereas some plants are having colorless flowers. Some plants they are tall in height, whereas the other ones they are dwarf. And the character or a trait which is reported in a majority of the pea plants that may be called with the title name as dominant, and the character or form of the trait which is available only in a few
representative plants. That is referred to the name of recessive. I want to say, if Mandel assessed the 100 plants of garden B and he reported 80 plants are having the colored flowers and 20 plants they are having the colorless flowers, then I can say colored flower character is dominant to colorless flower character. And so is the case with the second important trait. Imagine the case Mandel have reported 80 plants tall and 20 dwarf in a population of 100 pea plants. Then I can say the tallness would be dominant and dwarfness would be recessive. In the direct version, I want to say the character or form of the character which is available in majority of individuals, that may be referred to the name of dominant, and the form of the character which is available only in a few individuals, that may be referred to the name of recessive. So this is the response to the part A. How do Mandel experiments show that the traits may be dominant or recessive? Mandel reported that if a character appeared in majority of the plants, the character may be treated as dominant. And if the character appeared only in a few representatives, it may be referred with the name of recessive. Then let's move to the part B of question number 5. Inheritance of true traits is independent of each other. Mandel proposed a few principles and laws of genetics. And one of the law of the genetics is law of independent assortment. Law of independent assortment. In the law of independent assortment, Mendel said that inheritance of one character is independent of the other. That is, I want to say, imagine if a plant is having tall and colored flowers, and that plant is crossed with a plant having white and dwarf features, then the inheritance of character of height, tallness or dwarfness would be independent of inheritance of character of color of the flower. So it means that inheritance of the traits, whether they are 2 in number or they are more than 2 in number, it is independent of each other. So this was the response to the part B, that is Mendel proposed law of independent assortment. Law of independent assortment states that when the two traits are inherited from one generation to the second generation, their inheritance will be independent of each other. They don't get mixed with each other, and they will maintain their individuality and identity. Then question number 5 is having the another option with the separation word or, if you see on the screen. The second optional question which is given here is a cross was made between pure breeding pea plant, one with the round and green seeds and with the other with the wrinkled and yellow seeds. Okay, where it is given below, a cross was made between pure breeding plant with the round and green seeds with the wrinkled and yellow seeds. Write the genotype of F1 progeny. That is, you have to write the genetical makeup of first filial generation which is formed by these two parents after crossing. That is when a cross is made between round and green pea plant with the wrinkled and yellow pea plant. Round and green, they are the attributes of the seed of the pea plant. Seed is round and green in color, and in the second parent, the seed is wrinkled and yellow in color. And when two such varieties of pea plant they are crossed with each other, then the zygote which is formed, that may be referred with the name of first filial generation.
that is referred with the name of F1 generation. The question is, write the genotype of F1 progeny. So you may see the genotype of F1 progeny is capital R, small r, capital Y, small y. This is the genotype of F1 progeny, and give reason for your answer, because we know that at the time of inheritance, that is when these two parents they are crossed with each other, then the gametes which are formed, they are having half of the number of genes as well as the chromosomes as reported in the parents. I want to say, you may see four different alleles or genes in one parent. So how many alleles or genes may be there in the gamete? Only two of them, that is capital R and small y. Likewise, in the second gamete, we have again half of the number of alleles or gene, that is a small r and capital Y. And when they undergo fusion with each other due to the process of fertilization, then the zygote which is formed, it is having the genotype capital R, capital Y, and small y. So hence the genotype of the F1 generation would be capital R, capital Y, small y, and it is due to the process of hybridization between the two plants which have been cited here. Then move to the part B. Write the different types of F2 progeny obtained along with their ratios when the F1 progeny was self. Okay, that is what is the meaning of the statement F1 progeny was self. It means that if we have the two plants with the same genotype, two F1 plants with the same genotype, one with capital R, small r, capital Y, small y, and second is with the same one, capital R, capital Y, small y. Then four types of the gametes would be formed here. Four types of the gametes would be formed here. And we have 16 different zygotes which are formed due to the crossing between these four different kinds of gametes. 4 into 4 is equal to 16. And this progeny, which is called as F2 progeny, after their crossing, appear in the ratio 9:3, 3:3, 3:1. 9:3, 3:3, 3:1. This would be the ratio. 9 would be having uh, round and yellow seeds. 3 would be having round and green seeds. 3 would be having wrinkled and yellow seeds, and 1 would be having wrinkled and green seeds. This is a proportion which we get in the F2 generation when the selfing is made between the two plants which are having the genotype capital R, capital Y, small y, and with the second one having the same genotype capital R, capital Y, small y. So this is as per the Mendel law of independent assortment. So keep in mind the ratio which we obtain in the F2 generation. The F2 generation is 9:3, 3:3, 3:1. Then move to the question number 7. Give two ways in which biodegradable substances would affect the environment. So keep in mind we have the two different types of waste materials. One are called as biodegradable kind of waste and second are known as non-biodegradable kind of waste. Biodegradable waste are those waste which can be easily be decomposed by the activity of microbes like bacteria or fungi. Whereas a non-biodegradable waste are those which cannot be degraded with the help of bacteria or fungi. And no doubt the non-biodegradable waste is a big problem for the mankind in comparison to the biodegradable waste, because biodegradable waste can be decomposed finally into the soil. But there are the two important disadvantages of biodegradable waste as well. It can affect the environment as well. Because when the biodegradable substances, they are decomposed by the activity of microbes like bacteria and fungi, the harmful gases may be liberated into the environment like methane or butane or something, etc.
which may create the respiratory problems. Secondly, the biodegradable waste decomposition may attract the flies, mosquitoes, and several other kinds of pathogenic organisms, and it is the open invitation to the diseases. So it means that the biodegradable waste may act as a source of contamination and disease, and they may pose the pollution problem. So hence I have given the two ways in which the biodegradable waste can affect our environment. Then another option for the question number 7 with a link of or, that is part A. What is the 10% law in context of energy transfer in food chain? So basically, in the ecosystem, energy flow takes place according to 10% law of flow of energy. So as per a 10% law of flow of energy, when the energy is transferred from one trophic level to the second trophic level, or second trophic level to third trophic level, or third trophic level to the fourth trophic level, or so on. Only the 10% of energy is fixed in the next level. The 90% of energy is lost as free energy. That is, imagine the case, level 1, first trophic level is having the 100 joule of energy. Then in the next trophic level, only 10 joule of energy will be conserved and 90 joule of energy will be escaped out in the form of heat, or it is lost as non-usable energy. So this is called as a 10% law of energy of transfer. So let's see the case. Imagine a food chain which is starting from plants. Then the plants may be eaten by, let's say, grasses are there, they may be eaten by the grasshopper. Grasshopper is further eaten by frog. Frog is eaten by, let's say, snake. So keep in mind, let's say if the plants are having the 100 joule of energy in it, then in the next level, only 10 joule of energy is conserved. In the next level, only 1 joule of energy is conserved. In the next level, only 0.1 joule of energy is conserved. So it means that during the energy transfer, 90% of energy, it is lost as heat, or it is lost as non-usable energy. So again, in the second case, the 90% of the energy, it is lost. 90% of the energy is lost. Only 10% of energy is fixed in the next level. This is called as 10% law of flow of energy in the ecosystem. Then refer to the part B of question number 7. In the following food chain, 20,000 joule of energy was available to the plant. How much step would be available to the man in this chain? So they have given us a food chain beginning from plant, moving through sheep up to the man. In the plants, they have given the statement 20,000 joule energy was there. So how much energy would be available to the man in the chain? So as per 10% law, up to the sheep, the energy which basically get conserved is only 10% of 20,000. I want to say the 10% of 20,000 would be 2,000. Only 2,000 joule of energy will be available in the sheep, and up to the man, 10% of 2,000, that is 200 joule of energy, it is available up to the level of man. So it means that if man ate the sheep meat and sheep ate the plants, then the man gets only 200 joule of energy as per 10% law of flow of energy. Now let's move to the question number 10. One plant with a dominant tall height
bearing purple flash, crossed with another plant with a recessive dwarf plant and white flat plant. What do the plants of F1 generation look like? What type of cross is it? And what is the phenotypic ratio in the F2 generation, and name the type of plants obtained according to the phenotypic ratio. Keep in mind, this is according to Mendel's law of genetics. We have to solve this question as per Mendel's law of genetics. So first of all, we have to make the cross showing the statement. One plant with a dominant tall height. If a plant is tall, we can write its genotype as capital T, capital T. And in the statement it is given, it is also bearing the purple flash. So let's say it is having the genes for it, capital P, capital P. That is crossed with the another plant with a recessive dwarf. Dwarf character is shown by alleles small t with the white flash, small p, small p. So if we make the cross now, the gametes which are formed here, pollens, this is, imagine the case, this is one of the parent, male parent, this is the female parent, and at the time of gamete formation, meiosis takes place, and meiosis minimizes the chromosome number to half. So therefore, in the gametes, we have only two alleles, capital T, capital P, and here we are also having the two alleles, small t and small p. Parents are having the four alleles and gametes are having only two due to the reductional division, which is called as meiosis. And fusion, which is called as a fertilization, will lead to the formation of this genotype, capital T, small t, capital P, small p. So this plant is referred to the title name as F1 progeny or F1 individual. This F1 progeny plant, it is having the genotype capital T, small t, capital P, small p, and with the phenotype tall and purple. That is, it is tall and it is having the purple flash. So let's solve the various parts of this question on the basis of the cross we made. Part is, what do the plants of F1 generation look like? What do the plant of F1 generation look like? The first part, F1 generation would look like tall and purple. This is the first response, tall and purple. Second is, what kind of the cross is it? It is a type of dihybrid cross, because the two important characters, they have been selected in order to make the cross. Dihybrid cross. This is called as dihybrid cross because we are using the two characters together in order to make the cross. The two characters are which are selected here. One is the height of the plant and second is the color of the flower. Then the part C. What is the phenotypic ratio in the F2 generation, and name the type of plants obtained according to phenotypic ratio. That is, this is a F1 progeny we are getting. And when the F1 progeny is used to raise F2 generation is raised by the formula F1 is self with F1. Then the F2 progeny we can have, and it will be there in the ratio 9:3, 3:3, 3:1. And 9 would be tall and purple. 9 would be tall and purple. 3 would be tall and white. 3 would be dwarf and purple. And 1 would be dwarf and white. That is a ratio of the various individuals which we get in the F2 progeny. That would be 9:3, 3:3, 3:1. And the phenotypic ratio would be 9 tall and purple, 3 tall and white, 3 dwarf and purple, and 1 dwarf and white.
So hence we have solved this question as well. Then question number 13. List any two problems caused by non-degradable items. In the earlier question, I have told to you waste material can be grouped into two important types, biodegradable and non-biodegradable. Non-biodegradable items or waste are those kind of waste material which cannot be decomposed by bacteria or the fungi. And non-biodegradable items includes the plastic waste, rubber, and some other organic chemicals like pesticides. And the major problems which are created due to the spread of non-biodegradable waste is mainly the pollution problem and secondly the diseases. These are the two important harm created by the non-biodegradable items because they cannot be degradable by the bacteria as well as the fungi. They are responsible for causing the pollution as well as they are also act as causal of various diseases. As if I exemplify, there is a disease which is referred to the name of Minamata disease. Minamata disease, it is caused due to the mixing of mercury liberated by the industries of Japan into a bay which is called as the Minamata. And the persons which are affected due to the mercury poisoning, due to the consumption of mercury polluted water, because mercury is non-biodegradable waste. Basically, the nerve numbness takes place. That is, in other words, I can say the paralysis can take place to the person which is exposed to the mercury poisoning. So hence we can say the non-biodegradable items are responsible for causing the pollution as well as the diseases. Then second question, part B portion, question number 13. Why are some substances are biodegradable and some are non-biodegradable? And in this case, the examiner wants to have the distinction between the biodegradable as well as the non-biodegradable waste material. Biodegradable waste are those waste material I have already told you which can be degraded by the microbes, whereas the non-biodegradable waste are those which cannot be degraded by the microbes. Biodegradable waste, they are normally harmless in comparison to non-biodegradable waste material. For example, wood is biodegradable, where and paper is also biodegradable, whereas the plastic waste, then pesticides, medicines, and drugs, they are non-biodegradable waste material. Then question number 14, we have Nidhi's grandmother often scolds and blames her mother for giving birth to the four daughters and wants another marriage of her son. Part A. What kind of sex determination is present in the human beings? So keep in mind, in case the human beings, the kind of sex determination which is reported, that is called as XXXY type of sex determination. Okay. In case of female, the genotype is XX with reference to the sex chromosome, whereas in case of the male, the genotype is XY. Male is heterozygous with reference to the sex chromosomes, whereas a female is homozygous with reference to the sex chromosomes. So it means that female is capable of producing only one kind of eggs having X chromosome, whereas a male is capable of producing the two different types of the sperm, one with the X chromosome and second with the Y chromosome. That is, the sperms are of two types. I want to say one are having the X chromosome and second may have the Y chromosome. The X chromosome bearing sperms, they are referred to the name of androsperm. Androsperm. Whereas the Y chromosome bearing sperms may be referred to the name of gymnosperms. So hence I can say the sex determination which is reported in the human beings, that would be XX and XY type. Then the part B, how a pair of male and female chromosome represented. The male chromosome can be represented with the title as XY and female chromosome can be represented with the title as XX. That is, XX is the representation for the female, whereas XY is the representation for the male, because I have already cited here XY is a genotype of female male
and XX is the genotype of female. Then question number 14, part C. One is male individual called as heterogametic and female individual as homogametic. The male individual is heterogametic because it can produce the two different types of the sperm. One is X, second is with the Y chromosome. Whereas a female would be homogametic because female is only capable of producing the eggs with the X chromosome. That is, the eggs which are formed or the gametes which are formed by the female would always having the X chromosome. Hence, we can say female is homogametic and male is heterogametic. Then question number 14, with a separation word or, that is, what is sex determination and is it right to blame a female for the sex determination? Sex determination is a phenomenon when the sex of the fetus that is determined on the basis of fusion between male as well as a female chromosome, and we know that the sperm is having either X chromosome or Y chromosome, whereas the egg is having only X chromosome. When a Y chromosome bearing sperm fuses with the egg, we can have the zygote with the XY combination. So this zygote will develop into male child. Whereas if the sperm with the X chromosome fuses with the X chromosome bearing egg, it may lead to the formation of combination XX, and the female would be formed. It means that we cannot blame the female for the sex determination because the female is only producing the eggs with the X chromosome. Male is responsible for production of two different types of the sperm, one with the X and second is the Y. If the X sperm fuses with the X egg, we can have the female baby, whereas if the Y sperm fuses with the X egg, we can have the XY combination in the zygote and it will lead to the formation of male child. So hence the male is responsible for formation of two different types of the sperms, and he is only responsible for fixing of sex of the individual, and hence it is wrong to blame a female for sex determination. Then question number 15. Jatin was preparing for his examination when his 4-year-old cousin started crying loudly over his Boka toy. And Jatin thought of a way to calm the child. He brought a magnet and an iron. And actually, this is the question from the physics. And I cannot respond to this question. This is a section of physics. So thank you so much. The questions of bio section I have discussed. Now I welcome our next teaching fellow, Ma'am Kajal. Thank you, sir. सो स्टूडेंट्स, आप सबने आज जो पेपर डिस्कस किया काइंड ऑफ प्रीवियस और सैंपल पेपर जो है, जो आपके 10 सीबीएसई के एग्जामिनेशंस होने हैं, बोर्ड एग्जामिनेशंस होने हैं, उसकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी जो है वो हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा डेली आपके लेक्चर्स लिए जा रहे हैं। अब आप सबको पता है कि सीबीएसई के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से आपके जो एग्जामिनेशंस हैं दैट इज ऑन 26 अप्रैल, और बहुत ही ज्यादा टाइम अब आपके पास इस चीज के लिए पड़ा है। अप्रोक्सीमेटली 2 months यू आर हैविंग इस पेपर की तैयारी के लिए 10 सीबीएसई के लिए। सो एजुकेशन वर्ल्ड आपके लिए क्या लेके आया है कि रिवीजन क्लासेस जो हैं, रिवीजन क्लासेस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशंस, पेपर की तैयारी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के रिवीजन क्लासेस के ऑफलाइन बैचेस जो हैं वो एजुकेशन वर्ल्ड में मंडे से स्टार्ट किए जा रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी है आप तो भी एजुकेशन वर्ल्ड के साथ कांटेक्ट कर सकते हो, और इसके रिगार्डिंग अगर आपने कुछ भी जानना है इन बैचेस के रिगार्डिंग तो आप एजुकेशन वर्ल्ड में विजिट भी कर सकते हो। टोटल आपके टर्म 2 के फुल सिलेबस की रिवीजन रहेगी। इसमें 4 सब्जेक्ट्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी और मैथमेटिक्स 4 सब्जेक्ट्स जो हैं वो इसमें आपके रहेंगे। ऑफलाइन आप जितने भी डाउट अपने हमारे टीचर से, हमारी सब्जेक्ट फैकल्टी से
जो आप सबने देखा है, लाइव लेक्चर्स आप रोज सुनते हैं, रोज हमारे साथ जुड़ते हैं, रोज आप तैयारी करते हो अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस की। अब इसके ऑफलाइन बैचेस हम लोग ऑफर करने जा रहे हैं, मंडे से इसके बैचेस स्टार्ट हैं। सो आप जल्दी से जल्दी आके अपना रजिस्ट्रेशन और एनरोल इन बैचेस में करवा सकते हो, ताकि आपको टाइमिंग्स का भी पता लग जाए और आप फेस टू फेस टीचर्स के साथ मिलके इंटरेक्शन भी कर पाओगे, डाउट्स भी अपने क्लियर कर पाओगे, और रिवीजन बैचेस में अपने बोर्ड में अच्छा स्कोर करने के लिए आप यहाँ पे हमारे एजुकेशन वर्ल्ड में आ सकते हो। एनरोल करवाओ, एडमिशन लो और रिवीजन क्लासेस जो हैं वो अपनी अटेंड करो, ताकि आपका जो 26 अप्रैल से बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू होने जा रहे हैं आप उसमें अच्छा स्कोर कर सको। सो बहुत ही बड़ा एडवांटेज रहेगा आप सबके लिए ये, क्योंकि ऑफलाइन आप टीचर्स को मिल भी सकते हैं, टीचर से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, टीचर से डाउट जो है वो फेस टू फेस उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। सो इसके लिए आप हमारे सेंटर में भी विजिट कर सकते हैं, और साथ ही साथ कॉन्टेक्ट नंबर्स जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर्स पे हमारे साथ कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू। डिस्क्रिप्शन में